क्या उनके लिए हम जो है फांसी की सज़ा मुकर्रर करके ऐसी प्रॉब्लम्स को लगाम लगा सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स पे? आप मेरे से पूछ रहे हैं, सर से पूछ रहे हैं? सबसे. What is the question? He's saying about the rape law, about hanging. See, yeah, that's the law of the land. We are nobody to decide on the law of the land. We are here to reflect what the society has shown us and what we see around the society. But just one. I'll just give Shantanu. So I am not here to give any diktat on that. जब रेप की स्थिति होती है वो दिखता है. ये प्रॉब्लम तो भयंकर है. ये तो विजुअल रेप होता है. मैं दिल्ली का हूँ, बस में ऊपर से नीचे तक घूरते हैं. उसका तो देयर कैन नॉट बी एनी लॉ. इट इज व्हाट वी हैव टू चेंज विद इन आवरसेल्व्स. आई थिंक दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम. And there's been a lot of discussion about capital punishment. कि ऐसे लोगों को हैंग किया जाए या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. And there also there have been 2 or 3 opinions about capital punishment. Many say that so-and-so murdered somebody, he should be hanged. And then there is a whole process of law that takes place. And say after 2 years, 3 years, 5 years, 6 years, the final judgment comes, yes, hang him to death. The argument that was given at that time, and this is not my argument, it's just something that I keep reading, is that you are replicating for the murderer what he did to the victim. He killed, therefore he must die. And the argument that is very strange. They said the person who was killed immediately on the spot, perhaps without knowing. The person who's going to be killed or going to be hanged is living in fear. I don't know when I'm going to be hanged and when I'm going to be killed. Is that more serious or is this more serious? It's a huge question mark. Because that person who's in jail, who doesn't know what his fate is going to be, is living in fear every second कि आज मेरी मृत्यु होगी या कल होगी या 4 साल बाद होगी. So they feel that is equally serious as far as capital punishment is concerned. And there's a huge debate going on this. Yeah, there's a world debate going on in this. Yeah. ये कानून तो बन ही रहा है. बहुत से कानून बन गए हैं और कई जगह उनका दुरुपयोग भी होता है. बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि सर ये जो महिलाओं के लिए तो आपने कर दिया है, मर्दों के लिए नहीं किया. और वो कहते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कानून इस तरह का है, वो जानबूझकर किसी मर्द को फंसा देती हैं. सर इसने मुझे मोलेस्ट किया, अब आप उसको प्रूव करते जाइए, तब तक वो तो अंदर हो गया. बट दैट मैटर वॉज वेरी क्या भैया ये क्या है? नहीं इसकी जरूरत नहीं यार उसको. उसकी भी एक छोटा सा मेंशन है हमारे शुरुआत में, जब प्रोसिक्यूशन के लॉयर पीयूष मिश्रा जी आर्ग्यू करते हैं तो इसी बात को उठाते हैं. लॉज ऐसे बन गए हैं where women are misusing this law against men, and there have been actually I don't mind stating it, there are many friends of mine who have come and said that some of their friends are actually in jail because the woman has misused this law against them just because they weren't able to comply, if I can put it mildly, to what the lady was wanting, and therefore he's in jail now. So it's working in reverse also. Very few cases, and they can be fought in court and all that. But yes, that is also happening, and that mention was made by the prosecution, Piyush Mishra, in the film, in the beginning of his argument. His opening argument was that. Hello, sir. Hello. One sec, just give him a mic. I want to, firstly, congratulations. It was one of the best films ever made in India. Outstanding is the word. I really don't know whom to praise more, the writer or the writers or the director or the actors. I think, and by actors I mean right from Bachchan Saab to the person who had one single scene. I think nothing is wrong in the film. I want to know two things from the writers. This scene where Bachchan Saab asks Meenal, are you a virgin? Are you a virgin? Did you all think that you all would get the answer as no? 10 years back, probably, if this film was made, the heroine would have been shown to be a Murat of virtues.
I have not let a boy touch me and all. So to take this step and therefore alienate probably the 40 or 50 plus audience. शायद they are such orthodox audience, they may say अगर ऐसी लड़की है तो फिर तो इसका ऐसा ही होना चाहिए. There is a chance. Did you all deliberate on that, or it was the first thought and therefore you all went with it? And secondly, whose idea was it to show the entire drama जो hotel room में हुआ, right in the end titles? I think the person who has thought of this, there can be no more intelligent person in Bollywood. It is a master stroke. It is a master stroke. I don't know how anybody can think कि जिस जो crux है film का वो मैं last rolling titles में दिखाऊंगा. That also proves your genius, because nobody but nobody gets up from the chair, because that is अरे ये हमने देखा, you know, that kind of a thing. So that I got the answer. And that the previous question, that virgin part, was it too much of a hassle to come to the conclusion? Brilliant question, sir. Thank you so much for asking this. We have been asking for this kind of a debate rather than anything else. We really want to talk about it. It drained out writing that scene. Well, virgin in my films, I mean, sorry, Ritesh and Tony on that, has also existed in Piku also. A father tells a probable groom that my daughter is not a virgin. Do you want to still marry her? He asks directly, as direct if a father can. So, no, it's that question has never, that, you know, it's going to humiliate somebody or just. Have you ever known or have you heard anywhere that a man has been asked, are you a virgin? We have never done that. Never. I just want to add this, because this is what we discussed earlier on. Every time we ask a question to the woman, are you a virgin? It's a question mark. Every time we call it to a man, it's an exclamation mark. It's as though this is something great that he has achieved. Why is that? To give a brainstorm, how did we come to that scene? Yes, it was deliberate. So when Ritesh and me were discussing the script and the thing, the one thing that occurred that, Ritesh, we'll have to prove one important thing. A woman is drinking in the night in one hotel room with few boys. Right? This woman has gone through many possibly sexual, what do I say? Experiences. Experiences. The main point to come out was that मर्द ये सोचते हैं यार ये लड़की तो इतने लोगों के साथ सो गई, एक और सो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? Which is what my character says after that. So it's not that the virgin question. To arrive at that, कि एक बार और सो जाएगी तो, और मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे घरों के लड़के सब यही सोचते हैं, फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें कोई क्लास एजुकेशन आता नहीं है. और इस सवाल को पहुंचने के लिए आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट क्लेवरली दैट ही गॉट इट. हमको ये था, इसको पहुंचना था, हाउ टू गेट टू दिस एंड देन गेट टू द पॉइंट कि ये आपका जो फर्स्ट सेक्सुअल आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या आपको पे किया गया? पे तो नहीं किया गया आपको, और आपको फोर्स भी नहीं किया गया. इन दोनों पॉइंट को बातों करने के लिए, एंड आई थिंक आई सल्यूट व्हेन ही सेंड मी द सीन. मैंने उसको बोला, रितेश तेरा हो गया, तू तो पार हो गया अभी. एंड आई थिंक ही डिड ब्रिलियंट. आई वुड वांट हिम टू टॉक ऑन दिस. ही इज जस्ट डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑन दिस. कोई भी आर्गुमेंट या जो सवाल वकील पूछते हैं वो कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए पूछते हैं. तो आयु और वचन जिससे वो लाइन ओपन होती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका कंक्लूजन क्या है. उसका कंक्लूजन यही है जो बाकी सवालों के थ्रू होता है कि कंसेंट जो है, और ये कोई खाली सुजितदा मेरी बच्चन साहब या कहीं की महान सोच नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये कानून भी है. तो इसे ये ना समझे कि फिल्म में डायलॉग है, ये कानून है. कोई भी ऐसी महिला इंक्लूडिंग ए सेक्स वर्कर अगर वो ये सब करने के बाद, शराब पीने के बाद, अपने कई सारे सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बाद आपको ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही आप रुक जाइए, नहीं तो अंदर हो जाएंगे. आपको जस्ट थोड़ा सा एक बता दूं, हाउ डू वी यूज टू डू एंड राइट समटाइम्स, यू नो, समटाइम्स हम लोग कीर्ति और तापसी को ऐसे सामने बिठा देते थे और मैं और रितेश इधर बैठते थे एंड हम लोग डिफेंस लॉयर और जो है ये लॉयर बन जाते थे. एंड समटाइम्स तापसी यूज्ड टू गेट एंग्री लिटरली, सर आप ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो बिकॉज
we wanted तापसी to be तापसी and कीर्ति to be कीर्ति. हम लोगों ने वैसे ही डिसाइड, किसी ने हमको कॉस्ट्यूम्स को लेके पूछा था. आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं इनको जाके पूछा था यार ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या पहनोगे, ये नहीं कि कोई डिक्टेट फ्रॉम अस कि ये पहनना है तेरे को, बिकॉज इट इज देयर फिल्म एंड दे फील वी आर नॉट अ वुमन, सो दे विल नो सर हम ऐसे मोड में यही पहनेंगे. मैंने ठीक है तुम ऐसे मोड में यही पहनो. So that's why this natural जो उनकी जो आई है बिहेवियर बिकॉज ऑफ दिस. सॉरी मेरा आंखों के सामने हुआ था. आई वांट टू टेल यू समथिंग. वन इंस्टेंस इन कलकत्ता, in a particular society, I used to know a young girl. She did something good. They had a party. She came to me. She told me in the morning the society people are throwing her out and they are telling that she was doing wrong things because she was having a party. Maybe she was drinking with men and other women. And from the society, women were also there. And there, another instance, I was in a debate in a regional television after a particular rape case, where I told a woman has every right to go to a pub, but that doesn't mean people will take her for granted. But I was stopped. No, a woman can't go to a pub at 12 o'clock in the night. So out of all this angst, out of all this suffering, happened. Yeah. Requires guys to say, I promise all of us do that. And this time, this film for the first time tells us, don't go by what she's wearing or with whom she's moving. Probably she's doing all this, yet she will not allow to be used. This film for the first time at least explains to us कि जरूरी नहीं है कि वो जो कपड़े पहनती है, बोलने में dialogues बहुत बोले जाते हैं. This hits you here. It hits you. Thank you. Superb, sir. Thank you. Hello, I want to ask you a Hello. question. Angad, you are playing the main bad boy here in the film. आपकी जो विवशता थी वो हमने देखी कि आप खुद अपने आप से मजबूर हैं क्योंकि आपको ऐसा बड़ा किया गया था. आपके फादर ने जिस तरह का कोल्ड रिएक्शन दिया था इस सुन के, वो बता रहा था कि इसमें आपसे ज़्यादा उनकी गलती है. तो बाप अपनी बेटी को कहता है सर झुका के चलो, प्रोटेस्ट मत करो, और बेटी माँ उन बेटों पर फक्र करती हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है. हम सब ने ऐसी माएँ देखी हैं जिनके 4-5 बेटे होते हैं, तो वो बाकायदा इसमें फक्र करती हैं कि हाँ ठीक है तो मर्द है तो गुस्सा तो आएगा ही, चुपचाप कोने में थोड़ी बैठेगा, ठीक है उसको प्रोवोक मत करो, दैट पर्सन दैट गर्ल वाज नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, क्लीवेज दिख रहा था, थिंग्स लाइक दैट. माँ बाप का क्या रोल होता है इस तरह के डेविल्स को क्रिएट करने में सोसाइटी में? आप एज द बॉय इन द फिल्म हु इज ऑन द नेगेटिव साइड बता सकते हैं. देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो राजवीर सिंह है, ही इज़ नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, इसकी अपब्रिंगिंग कंजर्वेटिव है. तो जैसे आप सुजीता की सारी फिल्में देखेंगे सब हालात के कैरेक्टर्स हैं, तो राजवीर सिंह भी एक हालात का कैरेक्टर. जिस तरीके से आपने बोला कि हर माँ को गर्व होता है कहीं ना कहीं कि उसके बेटे को गुस्सा आता है, मैं ये कहूँगा कि हर माँ को अपने बेटे पर गर्व ज़रूर होता है, जैसे कि हर पिता को अपनी बेटी पर होता है. लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई भी माँ को गर्व होगा कि उनका बेटा गुस्से से अपनी पहचान बनाए. आई डोंट थिंक दैट. जी आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं ये जो ईवल थॉट है, या जैसे आपने डेविलिश थॉट बोला, ये जो हर मर्द के अंदर होता है उसको बुझाने की ज़रूरत सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं. और जैसे ये सीड है, ठीक है, वो सीड जो माँ बाप हैं वही जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे कि जब बच्चियां जवान होती हैं तो कैसे उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तो यही चीज़ हमें अपने बेटों को समझानी पड़ेगी एज पेरेंट्स, इवन इन स्कूल्स. जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं स्कूल गया था तो मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी. ये बहुत एक टैबू सब्जेक्ट रहा है इतने सालों तक. हालांकि आज तक
वो तो ये पिंक के वजूद से आज थोड़ा मैं भी उजागरित हो रहा हूँ जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल में था तो हमें सेक्स एजुकेशन या अबाउट द ऑपोजिट सेक्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया था। तो ये ज़रूरत है आज की कि ये पहले तो माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, उनको एक नारी को आदर जिस तरीके से और सम्मान जिस तरीके से दिया जाता है वो सिखाएं, क्योंकि नारी का वजूद जो हमारी सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जे पर रखा जाता है और उसको आदर करना, उसका सम्मान करना गुड हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जी Hi Sujit आगे sir, over here हाँ to चलिए Urjun चलिए hai. You know, like Komal sir mentioned about the. एक मिनट आ जाओ, बैठ जाओ। तू इतना पीछे जी बताइए। Like he mentioned about keeping the incident towards the end. Was it a deliberate attempt on your side? Because the characters throughout the film are narrating the incident. Okay, there was a reason behind it for doing that. Obviously, it was not just कि अच्छा एक कोई brilliant idea आ गया, नहीं ऐसा नहीं था. I wanted, I spoke to Ritesh about this. I wanted people in the theatre hall also to have a perception on the girls. कि मैंने बोला था कि लोगों को सोचने दो ये लड़कियां डिलेमा में रहने दो, शायद ये खराब है अच्छी हैं, खराब है अच्छी हैं. Because when you're watching the film, it was a very deliberate and I wanted to play with the psyche of the audience, the men who are coming or the women who are coming. So film में 3 चीज़ें होती है. एक क्राफ्ट होता है, एक ऑनेस्टी ऑफ आपकी इंटीग्रिटी होती है, और थर्ड होता है मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन तो सबको आता है, हमको आता है. हम हैं ही मैनिपुलेटर्स सब. No, I'm saying. So, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग हैं वो मेरे को आके बोलते हैं यार उन्होंने पैसे लिए हैं. मैंने बोला यार तुमको समझ में नहीं आया. मैंने बोला यार मेरे को तो हिंदुस्तान छोड़ देना पड़ेगा अगर तेरे को समझ में नहीं आया. नहीं हमको यार बताओ, क्लैरिटी मांग रहे हैं मेरे से. मैंने बोला उसका अगला सीन देखा है आपने? आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले सीन में मैंने क्लैरिफाई दिया है. मैं आज को बता दूं आपको. रितेश मेरे को सोचा था ये कल मुझे बोले, मैं हर समय क्वेश्चन करता था यार सुजीत दा ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है. मैंने बोला नहीं यार मेरे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं लोगों को समझ में आ जाएगा क्या ये बात, क्योंकि इतनी सटल है. मेरे को तो वो सेकंड वाले सीन में क्लैरिटी करने की भी ज़रूरत नहीं थी. मैंने कहा कीर्ति का परफॉर्मेंस इतना ही है कि समझ में आ गया कि वो उस सिचुएशन में एग्री करके यार कि पैसे लिए, हाँ लिए हैं यार, बोलो अब क्या करना है. ऐसा गुस्सा था उसका, उसने बोर्ड निकाल दिया. लेकिन अब क्या करें, ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, वो पूछते हैं कि यार पैसे लिए हैं. मैंने बोला यार यस, सो सारी वाई योर ब्रांडिंग, यस एग्जैक्टली. एंड फलक अली सेज इन दैट कि हाँ हमने पैसे लिए हैं, लेकिन लेने के बाद भी ये जो इसने किया ये सही था या ये सही. Which is the point of the film. तो बिलीव मी वो एक सटल इतना था. आपने सही पूछा है, तो we never wanted that and that anyway. So this is the clarification on that. और अगले सीन में वो कह देती ना जब मेरे घर में लोग सब सो रहे हैं. सर तब भी पूछा है सर. सारा ने बहुत अच्छा किया, बोल दिया, आर्गुमेंट ही खत्म हो गया. So it was more for the sake of the argument. बताइए. And so when films like Pink and Piku get acceptance and such love from the audiences, does it give more confidence to you to experiment in terms of presenting different kind of cinema over here? I mean, see, it definitely gives a courage. People ask me, why don't you do this kind of film and that kind of film? What kind of film I would know, the pot boilers or what? I said, look, I can only do a film. मेरे बचपन में स्कूल में मैंने यही सीखा है कि एक स्टोरी पढ़ने के बाद मेरी क्लास टीचर मुझे सबसे पहले बोलती थी, what is the moral of the story? And if I don't have a moral of the story, then there's no point I am here making a story, giving a telly or telling a story. So हर चीज़ में मुझे ये करेज देता है, किसी भी स्टोरी को कहूँ उसका एक मोरालिटी होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनसाइट प्रोफाउंड होना चाहिए. तो आई थिंक वो करूँगा आगे. इट गिव्स मी करेज. आई मीन कोमल जी ने और आप लोगों ने जिस तरह से इस फिल्म को मैंने ऐसा अनप्रेसिडेंटेड मतलब प्यार फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम अक्रॉस सेक्शन, फ्रॉम द रिव्यूअर्स, फ्रॉम द क्रिटिक्स मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया है. And I have another question to Kirti and Tapsi. Apart from it being a Amitabh Bachchan film, people are coming out and saying that apart from Mr. Bachchan, even you girls have left an impact, and people are talking about. This is wrong. Even in every interview, right from the time when we were promoting, I had said, when you see the film,
you will only see these girls and these young boys standing behind me. You will not see anybody else. And I was right. All the 4 boys have been made to stand up now. And this has come true. I'm so happy about it. So how does it feel when what Sir said has come out to be true and audiences are talking and discussing your characters as well? Sorry for coming late, first of all. I was shooting in Dadar, so hence. And coming to your question, frankly speaking, it hasn't seeped in as yet. Because we've been promoting the film so crazily just 2 days back. I just had half a day break yesterday and I've joined the sets of Naam Shabana today. So it hasn't seeped in. It's almost so good that you don't want to believe that something so good can actually happen. It is so good. Like, not even a single tweet has been even average. I have gotten tweets from random or messages. I don't even have those people names saved in my phone who have messaged me thanking to do this character. It just gives us so much of courage. There was a girl who was my junior in college. She was like, I went and saw it with my family. Even though after walking out of the theater, they still believe that it's not right to have sex before marriage. It's not right for the girl to wear these kind of clothes. But today, I'm still happy and I have tears of joy in my eyes that you could stand and represent us and represent my viewpoint. Like, she hasn't spoken to me after my college. So I've been getting messages like these, you know, you've proved to be a role model for us. Tell me, isn't it too much to handle for my third film? That's too much to handle. And I've always been, one more thing I just wanted to do or say, which I have held it all this while. Sorry, I don't know how to do it because I belong to a Sikh community, so we don't really touch feet that much. But thank you. That's all. Well, I mean, she has said a lot of things. Personally, it's just very overwhelming, and it's the reactions, the responses, the feedback, the love, the comments. It's just, all of it is just too good to be true. Of course, there's Mr. Bachchan in the film, and he represents Bollywood in a way that I think it's unimaginable. So to be in a film, to be in the same frame, to be in the same scene with him, and it's just not us, you know. I think as Komal mentioned, that everybody in the film, even if he or she has one shot in the film, has just done so much justice to the film. And I think the credit totally and completely goes to the writer of the film, Ritesh Shah, the director of the film, Anirudh, and Shujit Sarkar, for writing such a beautiful script, such amazing characters, and helping us give life to those characters, so much so that everybody is talking about every character in the film. And I think it's just not you are good or she is good. Everybody unanimously is also loving the film, and I think that is the biggest thing. So thank you so much. Thank you. Amit sir, you said in the beginning that it was a deliberate attempt on your part, to promote the movie. It was a deliberate attempt on your part to promote the movie after it releases, so that it evokes some sort of discussion or debate within the media or wherever you guys would go. What are the plans ahead? Where do you all plan to promote the movie? Would you be visiting colleges, and is there any time frame to when you will be promoting Pink? Do we still need to promote it? Not, but we said. No, do we? Talking about the movie. Yeah, we are doing that, Komal. I'm just coming to that. The plan is now, the next visit is Kolkata, where we are having an open discussion. Yeah, we're trying to do this with few judges also. Like for example, yesterday, I will not name, one of the top commissioner of police had called Ritesh and had told him that हम अपने हवलदारों को ये नहीं समझा पाए जो आपने इसमें समझा दिया. क्या बात है, मैंने उसको बोला. So top commissioners of police and lawyers. एक lawyer ने phone किया, उन्होंने कहा कि
ये जो कहा ना नो मीन्स नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में है। बोलते हैं हम कोर्ट में समझाते हुए पता नहीं थक जाते हैं कि कैसे समझाए सर, नो सर इसने नो बोला, अच्छा ठीक है बोला, आगे बोलो क्या है, मतलब आगे क्या बोले सर, नो बोला था इसने, तो वो बोलते हैं हम थक जाते हैं, वो आपने एक झटके में कर दिया है। सो वी विल बी प्रमोटिंग दिस, टेकिंग दिस पीपल। एक्चुअली मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला है कि बहुत सारे पैसे मेरे को दे दो ताकि मैं फ्री शो कर सकूं लोगों के लिए, बच्चों के लिए। जस्ट वांट टू डू सम फ्री शोज। आप लोग को जितना कमाना है आपने कमा लेना, उसकी इस फिल्म में कमाने की चिंता बिल्कुल मत करना, जितने लोग देख ले वो मेरे लिए शांति होगी, ना कि बॉक्स ऑफिस। Sujit, I got a call yesterday. हाँ, टैक्स फ्री अगर हो जाएगा तो बोल देंगे, हमको बहुत बोल रहे हैं टैक्स फ्री करने के लिए। आई थिंक वी आर ऑन दैट वर्ड जॉन itself. I want to share something. Tony wants to say something. I want to share something with all of us. Yesterday I got a call from a young girl. She told that we want to show this film on Father's Day. So क्या बात है, lovely sir. Amit sir? Thank you कोमल जी। नहीं कोशिश करेंगे लेकिन नहीं, थैंक यू सर, वी आर गोइंग इट, वी आर